ठीक अच्छे। नमस्कार सांग मैंने भाई भौणी मैंने आम 40 डे RRP रैपिड रिविजन प्लान फॉलो कर जो आमर ऑलरेडी पॉलिटी स्टार्ट हो सारी। आज आम एक्टिव रिकॉल सेशन नवा। ओके कहार द टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। ओके फंडामेंटल राइट्स विषय आम गोटे एक्टिव रिकॉल सेशन करवा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आपन को सबुतक आर्टिकल्स जाना पड़ो को आर्टिकल्स रे फंडामेंटल राइट्स लिखाई फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 right एटा मु लिखिदेली बट यू हैव टू रिकॉल प्लस which part of the constitution comprise the fundamental rights। ठीक तापरे एको मैग्ना कार्टा बोली कहंती कि क्वेश्चन पड़िबो which part is known as magna carta of the constitution कहंती कि that you have to see। ठीक नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रकार डेमोक्रेसी which type of democracy do fundamental rights vouch political social economic that you have to think in your head। ठीक नेक्स्ट आर्टिकल 12 रे कौन अच्छी आ से कौन भितर कौन कौन अच्छी what I mean to say is what all include the definition of state because article 12 का विषय को state विषय defines state। okay for the matter of fundamental rights तो state कहा को कहा जाए is defined in article 12। in this context let me know that if NCERT is considered to be state, if LIC of India is considered to be state, is the Bhubaneswar Municipal Corporation considered to be state। okay next article 13 रे कौन कुहाई that you have to remember it talks about law कौन ओके से लॉ रे किसी भी चेंजेस आसले सेटा जुडिशियल रिव्यू रे जीव कि जीवनी इज व्हाट आर्टिकल 13 सेज राइट। तो से आर्टिकल 13 रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतिला व्हिच इंक्लूडेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ हबो कि नाही is constitutional amendment is equal to law as per article 13 yes or no that you have to see। okay खाली food for thought दूची you guys have to actively recall if you don't remember go back and revise। next article 14 one of the most important articles। article 14 रे दिटा concept अच्छी कौन कौन equality before law और equal protection of laws। okay एमानक भितर डिफरेंस कौन एमानकर सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन ओके इंडिया रे कौन फॉलो करा होची these are some basic stuff that you should know। सेमती एथरा गोटे कौन अच्छी रूल ऑफ लॉ राइट रूल ऑफ लॉ कौन एवी डाइसी देते राइट रूल ऑफ लॉ रो कांसेप्ट व्हाट ऑल बेसिक ट्रेड्स कंप्राइज ऑफ रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल 15 और 16 को कंबाइन कर देखले एथरे कौन अच्छी दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट 15 टा कौन पे जनरल 16 कौन पे दैट यू हैव टू से प्लस कौन कौन ग्राउंड्स रे करि परिबनी आर्टिकल 15 रे हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर RRCSP रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ 16 रे कौन कौन ग्राउंड अच्छी दीज आर देयर प्लस आउ दुटा भी अच्छी डिसेंट आउ कौन रेसिडेंस। okay see those remember those। next article 17
एटा कहा ऊपर एप्लीकेबल स्टेट ऊपर ना प्राइवेट इंडिविजुअल ऊपर ना बोथ प्राइवेट प्लस स्टेट against whom protection is provided. You can understand कि ଯେତେବେଳେ independence ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ constitution ବନା ହଉଥିଲା that ଏଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଜି we can take it for granted कि untouchability is should not be there, like we are equal society, but back then it was so important कि याको fundamental right हिसाब रे पूरे दिया गला. Okay, so कौन ही दुर्दशा थिबो that we can imagine, right? Next, article 18 कौन कहूँ abolition of titles. को titles titles बोले कौन what all comprise of titles जो awards दिया होची civilian awards भारत रत्न हला पद्मा awards हला एगुड़ा titles की are these considered titles, yes or no, that you have to see. Can the recipients of these awards use these as their prefaces? Okay, that you have to see. Next, article 19 बहुत बड़ा article, one of the most important articles. Freedom of speech or expression विषय अच्छी कितना articles अच्छे तेरे माने कितना rights अच्छे तेरे 5टा right कौन अच्छी you have to see. Freedom of speech expression, freedom to form unions, cooperative societies, move कर पर freedom, business में freedom, okay, profession पे freedom, कोर्ट भी decide करे पे freedom, so that you have to see. Plus यांका पाई each freedom पाई you have been given reasonable restrictions. Okay, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ. If you can make a tabular format 5टा right ଲେଖ एपटे तांकर reasonable restrictions लेखो. Only for the first one you have the maximum number of reasonable restrictions. तापर बाकी दीदीटा अछि. Okay, next, article 20 article 20 रे कौन अछि अच्छा 19 रे if I ask you right to strike करिवार जो right is it incorporated in article 19? Is right to strike a corollary of article 19, yes or no? Do you have is it the fundamental right? Strike kariba amara fundamental right ki. Okay, that you have to see. Next, article 20 एथरे किछ Latin terms अछि like ex post facto law, post facto, double jeopardy, एमानंकर simple meaning कौन. Okay, you have to see this. Ex post facto law कौन और डबल जेपार्डी रा माने कौन कि गोटे ऑफेंस पाई दिथर सजा हो परिबो नाही. ओके, एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ कौन कि थरे ऑफेंस परे लॉ बनै कि ताकू आउ सजा दिया जाय परिबो नाही. ओके, द मोमेंट व्हेन यू कमिट द ऑफेंस एट दैट पॉइंट जहा लॉ थिबो सेही लॉ अंतर यू हैव टू बी ट्राइड एंड अंडर द रूल ऑफ लॉ. ओके, आज कौन ऑफेंस करी काल सकाळ गोटे नुआ लॉ आसबो आई विल नॉट बी punished by that. Okay, is it applicable to all like civil or criminal or only civil, that you have to see. Okay, माने retrospective law हे परिबो कि नाही एटा या कुछ retrospectively law apply हे परिबो कि नाही civil रहे परिबो ना criminal रहे परिबो ना both रहे परिबो ना कहा दरे भी परिबो नहीं. There's some food for thought that you have to see. Next, article 21, perhaps the shortest worded but the largest article in terms of encompassing the maximum number of rights. एतरे बहुत rights अछि, right? बहुत गुडे the माने scope of this article is huge. Daily body जाउछि आ scope. Okay, new rights are being incorporated. The latest being what? Right to clean environment or against climate change. एटा fundamental right हे गलानी. Okay, you have to remember this.
एइथरे दीटा इंपोर्टेंट केस अछि गोटे तो एके गोपालन केस आ गोटे मानेका गांधी केस एथुर बाहर थिला कोन यू हैव टू थिंग्स गोटे हला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आ गोटे हला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यांको भितर डिफरेंस कोन यार ओरिजिन कोन इंडिया रे कोन फॉलो करा होछ you have to see these okay next याद रहे राइट टू फ्रीडम पर्सनल लिबर्टी और लाइफ राइट रे ही यू हैव व्हाट 21A 21A कोन कोच राइट टू एजुकेशन ठीक केबे आस्तिला को अमेंडमेंट रे आस्तिला बहुत इंपोर्टेंट प्लस एनैक्ट केबे हितला एज एन एक्ट ओके राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे हितला एटा पचारतला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोधे ओपीएससी रे पचारतला 2009 की 8 रे एमती हितला राइट एटा चेक करिवे आपण माने नेक्स्ट आर्टिकल 22 मु सब आगु छोट बड़े माने जो प्रिपेयर कर 20 और 22 भितर कन्फ्यूज जाए सब कि कोटा कोटा सो रिमेंबर 22 रे कोन कोन अछि इट्स अबाउट डिटेंशन राइट दि प्रकार डिटेंशन गोटे प्यूनिटिव आ गोटे प्रिवेंटिव आंको भितर डिफरेंस कोन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोन दि जन पे कोन कोन दिया हिची केते घंटा भितर मैजिस्ट्रेट पाखरे देखा करिया पड़िबो ओके अटॉर्नी बा लॉयर देई परिबे कि देई परिबानी प्रिवेंटिव डिटेंशन रे के दिन रख परिबे मैक्सिमम ताटो बेसी रखा पहले कोन करिया पड़िबो यू हैव टू सी एटा को लिस्ट रे अछि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऊपर लॉ के बने परिबो यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट यू हैव टू सी ठीक नेक्स्ट आर्टिकल 23 or 24 we'll take these together traffic in human beings एथरे कोन कोन इंक्लूड होच what all are included is prostitution included you have to see okay children कहले कोन as per article 24 को एज रो चिल्ड्रन को लेबर को चाइल्ड लेबर बोली कहा जाए लेटेस्ट लॉ कोन जो पिला माने जाय कि रियलिटी शो रे पार्टिसिपेट करचंती रियलिटी शोज सेटा कोन चाइल्ड लेबर जाउची की यू हैव टू सी नेक्स्ट आर्टिकल 25 रु 28 ए चारटा आर्टिकल कोन पय रिलीजन पय राइट रिलीजियस फ्रीडम कौन कौन अच्छी मन रखिए स्टेट रो रोल कौन ओके स्टेट पब्लिक फंडेड पब्लिक मनी नहीं की रिलीजियस रिफॉर्म्स करि परिबो की पॉजिटिव आउ नेगेटिव सेक्युलरिज्म कौन इंडिया रे कौन फॉलो करा होछ काहे की होछ देयर सम फूड फॉर थॉट नेक्स्ट आर्टिकल 29 एंड 30 कौन अच्छे एथरे प्लस माइनॉरिटीज विषय लिखाई बोधे माइनॉरिटीज क्या को कहा जाए को टाइप रो टाइप्स विच टू टाइप्स आर मेंशनड प्लस डिफाइन करिछि कि कॉन्स्टिट्यूशन से माइनॉरिटीज को ओनली अबाउट माइनॉरिटीज और
any section of people एटा चेक करिए आपण डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन रो वर्ड कौन कौन अछि ओके नेक्स्ट आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल किए कहते ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते एटा प्लस एथरे कौन कौन अछि यू हैव रिट्स केते टाइप रो 5 टाइप्स राइट कौन कौन हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्सियरी आउ को वारंटो ईच रो माने कौन किए दे परिबो रिट किए लगे परिबो कहा ऊपर लागि परिबो हियर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ओके एटी हाई कोर्ट रोल भी डिस्कस कर देले भलो हो हाई कोर्ट रे रिट्स लागि परिबो हाई कोर्ट रिट लगे परिबो कि नाही ये जो फंडामेंटल राइट्स पई जो रिट्स लगे पर किए लगो सुप्रीम कोर्ट लगो राइट आर्टिकल 32 अंडर हाई कोर्ट लगे परिबो नाही यस और नो फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स पई लगे परिबो नाही यस राइट को आर्टिकल अंडर आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट रो पावर in terms of utilizing writs or pronouncing writs is greater than that of Supreme Court कहीं Supreme Court केवल fundamental rights में लगे परिबो High Court fundamental rights plus other legal rights में भी लगे परिबो ये आर्टिकल 226 और ये आर्टिकल 32 ओके नेक्स्ट आउ कौन रहला एतरे मार्शल लॉ कौन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करि परिबो का पई फॉर मेन इन यूनिफॉर्म मेन लेखवा टिका सेक्सिस्ट जाउची विल राइट ह्यूमन और पीपल इन यूनिफॉर्म बेसिकली पैरामिलिटरी होंतु बा पुलिस पर्सनल होंतु ए मानक पई फंडामेंटल राइट्स कैन बी curtailed because of law and order situations ओके एटा को आर्टिकल रे अछि देखि देबे नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली फंडामेंटल राइट की को आर्टिकल रे अछि कोठी थिला कोठी अछि ओके अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे शिफ्ट हेतिला you have to see these things right so fundamental rights so chapter is over एति जिनस आपण करिक जिवे ठीक अछि we'll meet in the next active recall session till then take care bye bye